Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's rise together. So here I come up with the NCRT highlight series and I assure you that and I can make sure कि ये series आपको like it can help you in every way. So मैं try करूँगी पूरा कि मैं मेरा best दूँ and अगर आपको भी best results चाहिए तो मेरे साथ NCRT लेके बैठिए and highlighter या पेन जिससे भी आप underline या mark करना चाहें वो लेके बैठिए. हम इसमें हर एक वर्ड कवर करेंगे एंड आई मेक श्योर जब आप ये सीरीज़ देख लेंगे तो उसके बाद जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने बैठेंगे उस चैप्टर के सो इट विल बिकम सो इजी फॉर यू एंड यू विल सी लाइक हमने ये पॉइंट पढ़ा था. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन. So yeah, we are starting with the first chapter of the human physiology, that is digestion and absorption. So let's start. Food is one of the basic requirements of all living organisms. Yes, it's true, like food, shelter, clothing, these are the basic needs, but food is one of the most important needs. The major components of our food are carbohydrate, protein and fats. Yes, इसे underline कर दीजिए. हमारे major components कौन से हैं? Carbohydrate, protein and fats. Minerals and vitamins भी हमें चाहिए, but that are required in the smaller quantities. Food provides energy and the organic materials for the growth and the repair of tissues. Very true. The water we take in plays an important role in the metabolic processes and prevents the dehydration of the body. वाटर के दो यूजेस है, उसे अंडरलाइन कर दीजिए. वाटर का हमारी बॉडी में क्या यूज़ है? पहला तो उसका मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में रोल है. सेकंड हमारी इट प्रिवेंट्स द डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी. सो अगर कभी भी ऑप्शंस में आता है वाटर हेल्प्स द मेटाबॉलिक प्रोसेस, act as it prevents the dehydration of the body, both A and B, none of this. So you should know that कि दोनों काम है उसका, metabolic process में भी and dehydration में भी. Biomacromolecules in the food cannot be utilized by our body in their original form. Complex molecules original form में digested नहीं हो सकते. They have to be broken down in the smaller molecules and yeah to carry out the digestion. So this have to be broken down and converted into the simple substances in the digestive system. As I told you, the process of conversion of complex substances into simple absorbable forms is called digestion, and it is carried out by digestive system by the mechanical and biochemical methods. Please underline this both words, mechanical and biochemical process. Digestion mechanical and biochemical दोनों तरह से carried out होती है. You know क्वेश्चन आता है कि digestion is carried out by mechanical, biochemical, both A and B or none of this. So बहुत लोगों को लगता है कि मैकेनिकल मेथड से क्यों होगा, बट मैकेनिकल मेथड से भी डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक it carried out the process. So both A and B. So underline कर लीजिए. So yeah, move on to the next topic, that is the digestive system. So yeah, digestive system. The human digestive system consists of the alimentary canal and the associated glands. Yeah, two parts में हम पढ़ेंगे, alimentary canal and the associated glands. So the alimentary canal begins with the anteriorly opening the mouth and it opens to the posteriorly through the anus. Alimentary canal की शुरुआत माउथ से होती है and it ends with the anus. The mouth leads to the buccal cavity or the oral cavity. The oral cavity has the number of the teeth and a muscular tongue. Each tooth is embedded in the socket of the jawbone. This type of attachment is called thicodont. सी यहाँ पे जो भी अंडरलाइन किया हुआ ना पॉइंट वो एक क्वेश्चन बन सकता है, लाइक इट्स मैच द कॉलम में आ सकता है क्वेश्चन लाइक tooth is embedded in the socket of the jawbone. That is the which type of dentition? That is thicodont. Majority of the mammals, including the human beings, have two sets of teeth during their lifetime. A set of the temporary milk or the deciduous teeth, which is replaced by the permanent or the adult teeth. So दो फॉर्म होता है, एक टेम्पररी एंड देन परमानेंट होता है ना. मिल्क टीथ अब टूट गए सो परमानेंट आएंगे हम कहते हैं ना. सो दैट इज द दिस टाइप ऑफ डेंटिनेशन इज कॉल्ड डाइफोडेंट. सो एन अडल्ट टीथ has 32 permanent teeth which are of four different types, that is incisors, canine, premolar and molars. इनकी अरेंजमेंट भी ऐसी ही होती है, ICPMM, that is incisors, canine, premolar and molar. Arrangement of the teeth in each half of the upper and the lower jaw in the order as ICPMM is represented
by a dental formula, uh, which in human is 2123 2123. It is very important. ये PYQ रह चुका है एक दो बार, so please इसे याद रखिए 2123 and 2123. The hard-chewing surface of the teeth made up of the enamel. Enamel is the hardest substance. It helps in the mastification of the food. The tongue is the freely movable muscular organ attached to the floor of the oral cavity by the frenulum. The upper surface of the tongue has the small projections called papillae which bear some taste buds. टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे टंग में, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में प्रेजेंट होता है. कहाँ? स्वीट, सॉल्ट, बिटर. अगर आप मतलब अभी तो एक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है कि कौन से कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बट अगर आपको ये देखना है तो आप गूगल पे भी सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन से बर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं. So tongue is the muscular organ and it is attached to the oral cavity by frenulum. आप इसे याद रखिए frenulum को. The oral cavity leads to the pharynx. The oral cavity leads to the pharynx. Pharynx it serves as the common passage for the food and the air. यहाँ दोनों मतलब food pipe भी होता है, wind pipe भी होता है. This is the region that is pharynx region जहाँ it serves as the common passage. The esophagus and the trachea opens into the pharynx, as I said, food pipe and the windpipe. The cartilaginous flap called epiglottis prevents the entry of the food into the glottis, opening of the windpipe during swallowing. Epiglottis windpipe के ऊपर रहता है. That is, it prevents the entry of the food into the windpipe. You know, कभी कभी होता है कि हम कभी खाते खाते बात करते हैं ना, तो फिर अचानक से प्रॉब्लम होती है. सो खाने मतलब खांसी आ जाती है. सो क्यों होता है वो? ड्यू टू द इनफंक्शन ऑफ द एपिग्लॉटिस. मतलब खाना अटक जाता है, मतलब विंड पाइप की तरफ जाता होता है ना, तो एपिग्लॉटिस उसे प्रिवेंट करता है. सो इस वजह से हमें कहते हैं ना ठसका लग गया, सो वैसा होता है. सो या एपिग्लॉटिस इसमें पूछ सकता है कि कौन प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ द फूड इनटू द ग्लॉटिस, मतलब विंड पाइप में फूड प्रिवेंशन कौन करता है? दैट इज एपिग्लॉटिस and it's a cartilaginous flap. So these two questions are associated with it. The esophagus is a thin long tube which extends posteriorly passing through the neck, thorax, diaphragm and leads to the J-shaped bag called as stomach. Stomach is the J-shaped bag. Esophagus it passes through the diaphragm. या वो भी important है line अगर आप देखेंगे तो. It passes through posteriorly through the neck, thorax, and diaphragm, and it leads to the J-shaped bag called as stomach. The muscular sphincter called gastroesophageal sphincter regulates the opening of the esophagus into the stomach. स्पिंटर्स लगे होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं, मतलब जैसे आप आगे भी पढ़ेंगे बहुत सारे स्पिंटर्स आएंगे. स्पिंटर ऑफ ओडाई, पाइलोरिक स्पिंटर. तो गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिंटर ये ओपनिंग ऑफ द esophagus को स्टमक में कंट्रोल करता है. Gastroesophageal sphincter also called as cardiac sphincter. It's the opening of the esophagus into the stomach. The stomach, which is located in the upper left portion of the abdominal cavity, has 4 different regions. आप position stomach का याद रखिए. That is it located in the upper left portion of the abdominal cavity. The cardiac, into which the esophagus open, fundic region, body, that is the main central region, and the pyloric region, which open into the first region of the small intestine, that is duodenum. थोड़ा सा हमें याद रखना चाहिए कि ईसोफेगस कार्डियक सिस्टम में मतलब कार्डियक रीजन में ओपन होता है. देन फंडिक रीजन है, बॉडी रीजन एंड द पाइलोरिक. तो आप समझ जाएंगे, बट कभी कभी डायग्राम थोड़ी कंफ्यूजिंग भी होती है, तो इस वजह से हमें पता रहना चाहिए. Small intestine is distinguishable into the 3 regions, that is C-shaped duodenum, long coiled middle jejunum, and a highly coiled ileum. And the opening of the stomach into the duodenum is guarded by the pyloric sphincter. Sphincters होते हैं like आगे आप देखेंगे एक sphincter of Oddi आएगा. So these are the sphincters. ये regulate करते हैं opening of the particular, जैसे opening of the
stomach into the duodenum is guarded by pyloric. Opening of the esophagus into the stomach is regulated by the cardiac or the gastroesophageal sphincter. याद रखिए, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, PYQs भी हैं इस पे, एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो या लेट्स मूव ऑन टू दिस डायग्राम. सो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो थोड़े से मतलब स्टेट बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं थोड़े उनके लिए न्यू होते हैं, बाकी तो सारे कॉमन हैं. जैसे पैरोटिड ग्लैंड यू कैन सी हियर, then submaxillary and submandibular glands. Then this is the esophagus, that is which passes through the neck, thorax, and diaphragm. Posteriorly passes. Then this is the pharynx, which serves as the common passage for both windpipe and the foot pipe. And उसके बाद this is esophagus which opens into the J-shaped bag called as stomach. This is the liver, gallbladder. This is the C-shaped duodenum. You can see जिसके बीच में pancreas lie करता है. Then this is the jejunum, you can see long coiled. Then ileum, highly coiled. उसके बाद this is the cecum, that is large intestine यहाँ से चालू होता है. This is the vermiform appendix, which is the vestigial organ. Ascending colon, then transverse, then descending. This is the sigmoid. Then this is the rectum जिसमें store होता है fecal matter, and this is finally the anus, the last part of the alimentary canal, and serve as the मतलब आउटर पैसेज. सो या आई होप डायग्राम से क्लियर होकर होंगे काफ़ी कंसेप्ट. हमारे तित जो हम लोगों ने देखा ना 2 1 2 3 2 1 2 3, दैट इज हाफ जॉ, 4 पार्ट्स में था, लाइक 2 1 2 3 2 1 2 3. सो दिस इज द वन अरेंजमेंट. आप देख सकते हो इंसीजर्स, कैनाइन, देन प्री मोलर्स, एंड दिस इज मोलर्स. जो कैनाइन होता है ना, दैट इज द टीयरिंग टीथ. मतलब किसको किसको बहुत लोगों को हैबिट होती है, लाइक हम कुछ बाय करते हैं तो मुंह से खोलने की कोशिश करते हैं ना, वो द कैनाइन हेल्प्स इन टीयरिंग दैट पैकेट. सो या दिस इज द स्टमक, ईसोफेगस जो ओपन हुआ कार्डियक रीजन में, देयर इज फंडिक बॉडी, पायलोरिक रीजन, एंड द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम. सो आई होप आपको लाइक उसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा क्या कैसा है सब. सो या लेट्स स्टार्ट विद द another, like आगे देखते हैं क्या है. The wall of the alimentary canals from esophagus to rectum possesses 4 layers, that is serosa, muscularis, submucosa and mucosa. आउटर से इनर दी हुई है ये serosa, muscularis, submucosa and mucosa. Serosa, this is the outermost layer, and it is made up of the thin mesothelium epithelial of the visceral organs with some connective tissues. Serocytes, it is the outermost layer. Muscularis, it is formed by the smooth muscles, and that is inner circular, outer longitudinal. ये हम अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. कभी कभी क्या होता है कि ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाने के लिए हमसे ऑर्डर पूछ लेता है आउटर टू इनर, और उसमें सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल डाल देता है. सो बहुत टाइम हम इग्नोर कर देते हैं दैट इज सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल, तो वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इसलिए बेटर है हमें पता होना चाहिए दैट इज इनर सर्कुलर एंड आउटर longitudinal layer. So an oblique layer which is present in some organs, like the submucosal layer is formed of the loose connective tissue which contains the nerve, blood vessels, and duodenum gland also present in the submucosa. So इसमें मैं आपको पूरा पढ़ा लेती हूँ, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, दैट इज द म्यूकोसा. सेरोसा तो आउटर मोस्ट लेयर है, हमें बस इतना याद रखना है. मस्कुलरिस, इट इज मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल एंड इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये याद रखना है. देन सबम्यूकोसा, दिस इज द लेयर जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स प्रेजेंट होती है. ऐसा पूछ सकते हैं ना कौन सी लेयर है वो, दिस इज द लेयर. एंड ड्यूडेनम में सबम्यूकोसा में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. जो ये लेयर्स है ना, दिस इज प्रेजेंट फ्रॉम द ईसोफेगस टिल रेक्टम. हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनल में यही 4 लेयर्स मिलती हैं, फ्रॉम ईसोफेगस टिल रेक्टम. सो हर एक पार्ट पे ये 4 लेयर्स होती है. सो ड्यूडेनम रीजन में सबम्यूकोसा में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी किस में नहीं, ड्यूडेनम में होते हैं. एंड द इनर मोस्ट लेयर दैट इज द म्यूकोसा, it forms the irregular folds called as ryugi in the stomach, and the small finger-like foldings called villi in the small intestine. The cells lining the villi produce numeric microscopic projections called as microvilli, which gives the brush border appearance. This modifications increases the surface area enormously. This is the brush, मतलब
ये डायग्राम देख रहे हो, this is extended part and it gives the brush border appearance. So this modifications helps in the increasing the surface area. ज़्यादा space बढ़ गया ना. The villi are supplied with the network of the capillaries and a large lymph vessel called dactyl. Mucosal epithelium has the goblet cell which secrete mucus and helps in the lubrication. Yes, mucus cells, uh, like mucus has the goblet cells which secrete the mucus, like mucosal epithelium has the goblet cells which secrete the mucus and its help in the lubrication. अब हमारे विंटर में पता है म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज, तो इट हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन. स्टमक के आउटर मतलब इनर साइड में भी म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द HCl से बचाने के लिए. So yeah, it's present in the stomach and the gastric glands and in the crypts between the bases of the villi and the intestine, that is crypts of Libertine. All the four layers shows modification in the different parts of alimentary canal. आप बोलेंगे इसमें क्या है जैसे टिक है. आजकल मतलब आपने देखा नीट 2022 में कैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे. सो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑल फोर लेयर शोज मॉडिफिकेशन और नॉट, मतलब करेक्ट है या इनकरेक्ट है. दैट इज़ द करेक्ट, दे शोज मॉडिफिकेशन इन द डिफरेंट पार्ट्स. एंड एज यू कैन सी यहाँ पे डायग्राम में, दैट इज आउटर सेरोसा, outer serosa, that is, this is the muscularis layer, that is inner circular and outer longitudinal, then submucosa, then mucosa and lumen. डायग्राम सारी इंपॉर्टेंट होती है, पता नहीं कभी कौन सा पूछ ले. यू नो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नीट में थोड़े कम आते हैं, मतलब एक दो आ जाते हैं, बट कौन सा आएगा वी डोंट नो. सो हमें हर तरह से प्रिपेयर होना है. देन सेकेंड डायग्राम, द लेक्टियल विलाई कैपिलरीज क्रिप्ट आर्टरीज एंड वेन. इसमें इस डायग्राम में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है कि एक आर्टरी और एक वेन, हम मतलब क्या होता है बहुत बार ब्लैक एंड वाइट डायग्राम आती है, सो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं यार कौन सी आर्टरी थी कौन सी वेन है. सो प्लीज़ उसे ध्यान रखिए. देन नेक्स्ट मूव ऑन टू द टॉपिक, दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. The digestive glands associated with the alimentary canal include salivary glands, liver, and the pancreas. Saliva is mainly produced by 3 pairs of salivary glands. समटाइम्स कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है तो हमें पता होना चाहिए 3 पेयर्स और 6 सलाइवरी ग्लैंड्स, मतलब कभी पेयर वर्ड मेंशन ना हो तो हमारे पास 6 सलाइवरी ग्लैंड्स है, एंड पेयर मेंशन हो तो 3 पेयर्स है. दैट इज पैरोटिड और द चिक ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, दैट इज द लोअर जॉ में प्रेजेंट होते हैं, एंड सबलिंगुअल, इट इज प्रेजेंट बिलो द टंग. This gland situated outside the buccal cavity secretes salivary juice into the buccal cavity. ठीक है. Liver is the largest gland of the body, weighing about 1.2 to 1.5 kg in an adult human. Liver, it is the largest gland in the human body. पूछ सकते हैं ना, this is the largest gland in the human body. बहुत common question and बहुत easy है, मतलब but फिर भी पता होना चाहिए. It is the largest gland. It is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm and has 2 lobes. इसकी position याद रहनी चाहिए, that it is situated in the abdominal cavity and just below the diaphragm. The hepatic lobules are the structural and the functional units of the liver, containing hepatic cells arranged in the form of the cords. Each lobule is covered by a thin connective tissue sheath called as Glissen's capsule. इस पे question आया हुआ है and important है, so it's better आप याद रखें that each lobule is covered by thin connective tissue sheet called as Glissen's capsule. The bile secreted by the hepatic cells secrete to the hepatic, passes through the hepatic ducts and is stored and concentrated into the thin muscular sac called as gallbladder. C. The bile is secreted by hepatic cells. Gallbladder वर्क करता है बाइल जूस को स्टोर करने का, प्रिपेयर करने का काम गॉल ब्लैडर नहीं करता है. इज स्टोर्ड एंड इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इनटू द गॉल ब्लैडर. सो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि गॉल ब्लैडर इज फॉर द स्टोरेज, मतलब उसका यूज है फॉर द स्टोरेज. एंड द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट अलॉन्ग विद द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट. अभी में डायग्राम से हम लोग जब करेंगे तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट.
open together into the duodenum as hepatopancreatic duct, which is guarded by the sphincter called as sphincter of Oddi. As I said कि स्प्रिंटर्स आएंगे एंड मैंने स्प्रिंटर का भी नाम लिया था, दैट इज स्प्रिंटर ऑफ ओडाई. इट रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ hepatopancreatic duct into the duodenum. The pancreas is a compound which is both exocrine and endocrine elongated organ situated between the limbs of the C-shaped duodenum. The exocrine secretes an alkaline pancreatic juice which contains an enzyme, and endocrine secretes hormones, insulin and glucagon. So pancreas is both exocrine and endocrine gland. So ये both तरह से काम करता है. एक्सोक्राइन पार्ट इसका अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, एंड एंडोक्राइन हॉर्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागन. सो या डायग्राम से हमें अपने डक्ट्स. सो मूविंग ऑन टू द डायग्राम. हम लोग डायग्राम से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं. सो यहाँ पे सबसे पहले लिवर आएगा, जो इन्होंने मेंशन नहीं किया. दैन लिवर से आते हैं ये, दिस इज डक्ट कॉल्ड एज हेपेटिक डक्ट. देन दिस इज द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से आया हुआ दिस इज cystic duct. Then they commonly form the common bile duct. So this is pancreas, this is pancreatic duct, जो ये वाला आपको दिख रहा है. And they commonly form hepatopancreatic duct and they open into the duodenum which is through the sphincter of the Oddi. So I guess कि डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या कैसे फंक्शन करता है. डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे पॉइंट्स लिखे हैं. सो या गाइज, पार्ट 1 की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं. वेट फॉर द पार्ट 2. एंड यस, मुझे बताइएगा इस वीडियो में क्या कमी, मतलब इन द सेंस मेरा समझाने में या किसमें कुछ कमी रह गई है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है. एंड यस, प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ी भी हेल्प की होगी तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज लेट्स राइज टुगेदर. बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.